चाहिए तो इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ. Okay, now it's black आएगा. Okay, okay, that's in a further perspective. Okay, so this is for green. And so for each and everything you'll use RGB. This is for RGB, and also there's also one more format, that is which this will the VS will give you. You can directly write the name, and you'll immediately get the color name. Okay, so this is, and also because of the आपको जो यहाँ पे color spectrum दिया जाएगा, you can select any color you want. Okay, so these are the three variations you can use for using a color. One is RGB, next is hexadecimal, next is directly आपका उस color का नाम you type it and you'll get it in the list में आपको आ जाएगा, you can select it. Okay, so this is what color is, or different types of colors which you can use. Okay, understood Devata? यस सर. Okay. सर उसके नीचे हैशटैग हेडर लिख रखा आपने, उसके आगे फिर मेन भी लिख रखा है, लेकिन उसके आगे तो आपने हैशटैग नहीं लिखा है. कहाँ पे? इस नीचे वाला सीएसएस कोड. CSS में. ओके, CSS में कहाँ पे? सर इसमें ऊपर, ज्यादा नीचे गए, ऊपर ऊपर. हाँ, हाँ ये उल्टा. रहा, इससे बॉडी के नीचे हेडर 1, हैशटैग हेडर 1 मेन फूटर, ये वाला पार्ट. ये. इसमें आपने हाँ हेडर हाँ हेडर के आगे हैशटैग लगाया, मेन फूटर के आगे क्यों नहीं लगाया? हाँ, I think I was explaining about combination of selectors. This is what I was explaining. One is a header tag, मतलब एक ID, some ID, जो भी ID है, let's say some जो भी whatever ID we use, so that is the ID tag, so the ID name. Okay, and this is main. Main is what? A selector. ठीक है? Sorry, main is a element. And footer is also an element. So how do we keep this thing and this thing with the same padding दिया जाएगा? So this is how you use a header also. Sorry, my bad. How do you use ID tag also and an element? मतलब it's basically combination of selectors. आप सिर्फ क्लास ही नहीं यूज कर सकते. You can add in different types of selectors also. यहाँ पे जो header use हुआ है, sorry my bad, ID use हुआ है, फिर element use हुआ है. So there's different types of element selectors you can use. Also, there is a hierarchy which you have to maintain. First is always going to be for header. Sorry, my bad. I'm not sure why I'm saying header. It's actually ID. I'll write it as ताकि ID यहाँ बाहर है. Okay. First is always going to be the ID. Okay, ID. Next is going to be the class, or next is going to be the element. This is the hierarchy. I think I gave you the hierarchy also, right? In when I was explaining only, I think I told you it was in the whiteboard itself. So सर there is इसको this hierarchy. यूज करने के लिए html में कैसे लिखेंगे फिर? जैसे पर्टिकुलर के लिए तो आईडी यूज करना तो आईडी के अंदर, क्लास करना हो तो क्लास के अंदर, लेकिन ये तीनों एक साथ है, तो इसको html में कैसे लिखेंगे यूज करने के लिए फिर? हाँ, ओके. सो इसको देखो. ओके, मैं आई थिंक आई एक्सप्लेन इट वन प्रॉपर टाइम. I'll actually take this out. I will create a small code. What I will do is I will create again buttons. Buttons is one of the best ways to explain this. Let's say download, which is looking like. Okay. Something like this. I'll write. अब 3 बटन है मेरे पास. What I will do is I will create one. इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा. First I'll keep it like that. Second मैं एक class दूंगा. I'll just bnt. Okay. इसका एक क्लास दूंगा. नेक्स्ट इज इसका मैं एक आईडी दूंगा. लेट्स से डाउनलोड, डाउन करके एक आईडी दूंगा. सो दिस इज माय आईडी. ठीक है. नाउ इफ आई पुट अ सेलेक्टर. ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक सेलेक्टर यूज करता हूँ, और व्हाट टाइप ऑफ सेलेक्टर? एलिमेंट सेलेक्टर. ठीक है. मैं VS कोड के अंदर आऊंगा. ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू VS फाइल सो इट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. स्टाइल डॉट CSS एंड आई विल बेसिकली से मुझे बटन. दिस इज व्हाट एलिमेंट. करेक्ट. बटन इज नॉर्मल एलिमेंट. सो मैं एक स्टाइल दूंगा, जो भी स्टाइल है. लेट्स से बैकग्राउंड.
background color is around something like this. ठीक है. Now what happens, सबका जो भी लिखा है मैंने, where is that code? हाँ, जो भी buttons है इन तीनों का it will show as what color, this color which I've selected. Let's close all these. Okay. Let's so जो भी मैंने लिखा है, this is the same color will be shown for all the three types of buttons. Okay. What I will do is I'll be like, hey, let's create a different classes. So let's say BNT1. I think I've already done this, but again I'm repeating. So let's do this. Okay. I'll change the names. Okay. Something like this I'll do. Okay. Now what am I doing here? Let's bring this down. Okay. So what is happening here? Now मैं button use किया हूँ, लेकिन मैं I don't want the same thing for all the three buttons, all the four buttons actually. So मैं क्या करूँ? What I'll do is I'll come to the code. Okay. I will remove this. Okay. And I will use class dot bnt. Okay. now इसका क्लास कहाँ पे यूज हुआ है? हर तीन मतलब तीन बटन्स में आई हैव यूज्ड bnt. ठीक है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल बी लाइक, हे, मुझे इस तीनों बटन के अंदर एक ही फॉन्ट दिखना चाहिए. सो व्हाट आई डू, आई से फॉन्ट फैमिली, लेट्स से sans serif or something like that. मैं कुछ फॉन्ट डालूंगा, मतलब तीनों के बटन के अंदर एक ही टाइप का फॉन्ट आएगा. ओके. फर्स्ट थिंग. सेकंड इज सेम फॉन्ट साइज होनी चाहिए. सेम फॉन्ट साइज होनी चाहिए. लेट्स से 12 पिक्सल्स. तो 12 पिक्सल्स मतलब यहाँ पे भी इस बटन का क्लास हुआ है, आई विल गेट द सेम स्टाइल. ओके. नेक्स्ट व्हाट आई डू इज, अब मैं मिक्स करूंगा, कॉम्बिनेशंस यूज करूंगा. व्हाट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस? लेट्स सी. आई विल से यहाँ पे भी मैं बटन यूज किया हूँ, मतलब डॉट बटन, कौन सा बटन वन, कहाँ पे है बटन वन? यहाँ पे है बटन वन. सो बटन वन एंड बटन थ्री. ओके. लेट्स गो टू कोड. बटन वन कॉमा डॉट बटन थ्री. ठीक है. एंड कॉमा मुझे अगर मैं आईडी भी यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस आईडी डाउनलोड, डाउन करके है ना आईडी. तो इफ आई वांट टू यूज दिस आल्सो, आई हैव टू यूज इट इन द बिगिनिंग ओनली. मतलब हैशटैग डाउन करके आई हैव टू गिव कॉमा. नाउ आई कैन यूज ऑल द थ्री टुगेदर and give it a same color. Excuse me. Yeah. So let's say I give a background color, or let's say color, direct font color. Font color will be green. Now what happens? All the button, okay, तीनों बटन का एक ही कलर आएगा. मतलब तीनों बटन का एक ही कलर, एक ही फॉन्ट फैमिली होगा, एक ही साइज में रहेगा. लेकिन only for button 1, button 3 and id. Okay, there will be a little bit difference, little bit of color difference. Okay, let's see the output. Let's save this. I don't think I have stopped this. Let's start this. Okay, it's not listed. Hold on. You have not linked the pages. Oh yeah, I have not linked the pages. Yes, yes, true. So let's link the pages first. Style sheet. Anyways, what is style? Style.com. Okay, now we have linked. Hopefully it will work. Yeah. So this is what we are seeing. ठीक है. मतलब जो भी मैंने सेलेक्टर्स यूज किए हैं, सारे सेलेक्टर्स का डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की होता है. पहला तो इफ यू वांट टू यूज आईडी आल्सो विद इन दैट, एक्सक्यूज मी, यू वांट टू यूज द आईडी. मतलब अगर आप आईडी यूज करना चाहते हो, इवन दो इट इज लोअर, अगर आप आईडी यूज करना चाहते हो, यू हैव टू गिव इट हियर. यू कैन नॉट डू इट समथिंग लाइक दिस. यू कैन नॉट गिव आईडी हियर.
Okay, something like this you cannot give. Why, sir? You have, sorry. Why? That's all. You can. The whole concept is there is always a hierarchy. There is always a the dominancy is being given to first is always ID. Second ID, the second dominance is class. Third dominance is going to be the normal element. That is आपका div tag हो गया, जो भी button tag हो गया, whatever that tag is, right? So that is how the hierarchy is given. So that is the reason you have to always use. It is actually you can use it, okay? But when you're coding again and again and again, you'll have the hierarchy will get messed up. That is the reason you use a one type of a flow. That is the hierarchy flow, right? So this is how you use multiple types of selectors in the same thing. Chahe ho it is element, chahe it is class, chahe it is ID. You can use all of that in the same thing. And also there is a parent and a child class. I think we have covered that also, right? This is how you use this. Okay. Okay. Yogita, I hope you understood. Got it? Yeah. Okay. So yeah. Any other questions, guys? Any other questions? I think we have crossed the limit as well. Any other questions? Please put it in chat box. If okay, let's do things. Since we have already crossed the time limit, what I will be doing is I'll be here for another 2-3 minutes. You can, if there is any questions, please feel free to put it in chat box. If you want to share something, put it in the chat box. You can directly unmute and talk. Okay, I'll be right here for another 3 to 4 minutes, and I think this is the end of the session. If you thank you so much for attending today's class, guys. We'll see each other in the next session. Okay, so if you don't have any questions, feel free to leave. If there is any question, please stay back. Okay, I'll be right here. Why, sir? Yeah, bye, Gaurav. Yes, Gautam, thumbs up. I think I missed a few thumbs ups here and there. Can you send your current project? Uh, Thank you, sir. Bye. Thank you, Gaurav. Sorry, Gautam. Thank you, Gautam. Bye, sir. Yeah, okay. Okay, Pratik, the current project, I will send it to you once the project starts. So right now, if I send it to you, you will not understand anything. Only maybe HTML I can send probably, you can understand, but I'll send it to you. Wait till 10th, you wait. Don't worry. ओके सर एक और पूछना है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे हमें एक पहले वाला तो खुद करना और दूसरा ग्रुप में करना होगा 5-6 का ग्रुप बनेगा जब हाँ, सही बात है. ओके. और सर एक बार अपना ये वेबसाइट बन गई तो आपको भेजेंगे कैसे जो अपनी कोडिंग होगी उसके थ्रू भेजेंगे हाँ, जो आप भेज रहे हो ना, ओके, वेट, I'll show that also. It's very simple. I'll share my screen. Hold on. ओके, जो आप मुझे भेजोगे ना, इट्स वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू गो टू द कोड. मतलब दिस इज द यहीं पे सारा कोड रहेगा, राइट? So all you have to do is you have to just click right click and you have to compress to zip file. So you will be sending me that zip file. Bus take this and you will upload it in the Google Classroom. Okay. ओके सर Yeah. Good question. I'll explain this also in the project. So don't worry. Yes. Any other questions? आप सर Yes, Pratik. Tell me. सर जैसे प्रोजेक्ट वर्क में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही तो जो कैंपलिंग अपना आप ये जो कंपनी है वो भेज सकते हैं हमें जैसे इनविटेशन वगैरह की हमारे कंपनी में आके ज्वाइन कर लीजिए आप या ऐसा कुछ Depends. I mean, I've personally complained से I think 3 people hire हुए हैं.
बट अगेन अगर नेसेसिटी है तब भी पूछे जाएंगे, अगर इफ देयर इज नो नेसेसिटी इट विल नॉट बी आस्क्ड। ओके, लेकिन एलओआर मिलेगा आपको, एलओआर या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट ऐसा कुछ मिलेगा आपको, वो जरूर है। लेकिन एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी अगर वैकेंसी है तब भी यू विल बी गेटिंग इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी गेटिंग इट। और सर जैसे पूछना, कोई भी हम वेबसाइट बनाते हैं एज अ फ्रीलांसर भी, हमें कितने डेज मिलते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं? As a freelancer, it depends on the project itself. Some people will take almost 2 months to complete it. Someone will take almost 6 months. Someone will take only 15 days. Right. So it depends on the project. Depends जैसे on. कोई भी वेबसाइट बनानी है हमने, उसमें ज्यादातर कितना टाइम लगेगा, 7 दिन या 15 दिन? Okay. So ई-कॉमर्स वेबसाइट्स मतलब फ्लिपकार्ट के जैसे या अमेजोन के जैसे उस टाइप की वेबसाइट बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट मिनिमम 2 मंथ्स। ठीक है, 1 मंथ में आप बना सकते हो, द बेसिक फ्रेमवर्क बना सकते हो, एक स्केलेटन बना सकते हो, लेकिन उसको एडिट करने में, उसको चेंज करने में वो सब टाइम लेके इट विल टेक यू एटलीस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स। अगर आप सिंपल वेबसाइट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल 2-3 पेजेस में वेबसाइट बना रहे हो, इट विल टेक यू अराउंड 1 वीक। ओके, एंड द मोर website web pages you want to create, the more time it will take. So around let's say आपको अगर इमीडिएटली कर सकते हो तो विद इन अ वीक। ठीक है, और इमीडिएटली आफ्टर अ वीक यू कैन डू इट, बट if it's a very big website, it will take at least 3 months, 2 to 3 months it will definitely take. थैंक यू सर। Yeah, राम राम जी। ram ram.